नमस्कार, सत श्री अकाल। वैस्टर्न न्यूज़ देख रहे जी पंजाब के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जुल सतनाम। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र पा लैंदे कुछ अहम खबरों ते। नौकरियां आउटसोर्स करने का मामला गरमाया। बराक ओबामा ने मिट रोमनी तो माफ़ी मंगण तो की ना। हिलेरी क्लिंटन का मिडल ईस्ट का दौरा खत्म। इजराइल और फिलिस्तीनी आगुआं नाल कीती मुलाकात। गूगल विच सन ला के याहू ने बनाया नवा CEO। गूगल की वड्डी अधिकारी मरिस मेयर बनी CEO। हुण खबरां तफसील नाल। बेन कैपिटल कंपनी के मुखी रहिंदियां मिट रोमनी ते नौकरियां आउटसोर्स करने का दोष लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माफ़ी मंगण तो इनकार कर दिता है। 6 नवंबर को होने वाली राष्ट्रपति चोण में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रोमनी ने ओबामा वालों लाए गए दोषों को झूठा करार दिंदियां उसनूं खारिज कर दिता है। बेन कैपिटल के मुद्दे ते देश के अमीरां च शुमार रिपब्लिकन उम्मीदवार रोमनी ते डेमोक्रेट्स निशाना साध रहे हैं। उन्हां ते $लाखों टैक्स हैवन देशों में रखे जाने के दोष लाए जा रहे हैं। शुक्रवार को मैसाच्यूसैट्स के साबका गवर्नर मिट रोमनी ने ओबामा के चोण प्रचार मुहिम च खुद के चरित्र ते हमला करने की माफ़ी मंगण की मांग की सी। रोमनी का कहना सी कि उन्होंने निजी रूप नाल हमला किया जाना राष्ट्रपति अहुदे की मर्यादा के खिलाफ है। ओबामा ने स्थानक वर्जीनिया टीवी को दिते एक इंटरव्यू च कहा कि वह माफ़ी नहीं मंगणगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ते उन्हां दी पत्नी मिशेल ओबामा सोमवार को एक बास्केटबाल मैच देखने दौरान किस करते फड़े गए। ओबामा अपने परिवार नाल US ओलंपिक बास्केटबाल टीम और ब्राजील की टीम के विचकार हो रहे मैच में देख रहे सन। इस दौरान उन्होंने मिशेल ओबामा को किस किया जिसनूं एरेना च लगे किस कैमरे ने फड़ लिया। अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे ते ईरान की कौमांतरी भाईचारे नाल गलबात की तजवीज़ गैर शुरुआती है। यरूशलेम च प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलदे हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने इस मामले ते इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नाल गलबात की है। हिलेरी ने कहा कि नेतन्याहू मुताबिक ईरान का परमाणु मसला एक कूटनीतिक है तो इसका वाशिंगटन को पहला हल करना चाहिए। अपने भाषण च उन्होंने इजिप्ट के लीडरां नूं अपील की कि वह इजरायल नाल शांति बनाई रखण। Today's consultations were particularly timely because our two-track policy of diplomacy and pressure is in full move here because of the P5+1 talks with the imposition of even tougher sanctions. We know the sanctions are biting. Israel and the United States agree on that. And we talked about concrete steps that we can take to continue to build the pressure. And as to the diplomatic track, I made very clear that the proposals we have seen from Iran thus far within the P5+1 negotiations are non-starters. Despite 3 rounds of talks, it appears that Iran has yet to make a strategic decision to address the international community's concerns and fulfill their obligations under the IAEA and the UN Security Council. It's absolutely fair to say we are on the same page at this moment, trying to figure our way forward to have the maximum impact on affecting the decisions that Iran makes. This weekend I traveled to Cairo. I met with the new president, a number of other key stakeholders, as well as Field Marshal Tantawi. My message in public and in private was the same. The United States and the international community look to the new leaders of Egypt to play a constructive role in advancing regional peace and security, in particular by upholding their international agreements, including the peace treaty with Israel. It's obvious that both Israel and Egypt, along with the region and indeed the world, all share a strong interest and commitment to this treaty, which has served as a backbone for regional stability for more than 3 decades. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने यरूशलेम दौरे दौरान मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकात की। दोहां आगुआं विचकार इजिप्ट और ईरान के विवादित परमाणु प्रोग्राम को लैके गलबात हुई। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन नाल शांति गलबात और ईरानियन न्यूक्लीयर प्रोग्राम संबंधी गलबात की है।
ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। I want to welcome you, so I say this formally, Secretary of State Clinton Hillary, to Jerusalem once again. And we were just discussing how turbulent and how swiftly changing the world is, and our part of the world in particular. So I look forward first to hearing of your impressions from Egypt. That has been an anchor of peace, and maintaining the peace treaty between us, I think, is something that is uppermost in both our minds. And I appreciate the efforts that you're investing to this end. We're going to talk about the Palestinians. That is also an anchor of peace, and we have to invest every effort to maintain it, to keep the tranquility and see if we can move the process forward. And third, we have our common effort to make sure that Iran not achieve its ambition of developing nuclear weapons. So that's a small agenda for this plate and for this dinner, and I look forward to discussing all these issues with you. Welcome to Jerusalem. Thank you so much, Bibi. Well, Prime Minister Bibi, it is wonderful to be back in Jerusalem, to have a chance to meet with your government, and now for us to have a working dinner to discuss the broad range of issues that you just mentioned. You're absolutely right. We're living in a time of unprecedented change with a lot of challenges for us both. And we will continue to consult closely, as we have, on an almost daily basis between our two governments, to chart the best way forward for peace and stability for Israel, the United States, the region, and the world. And we're all delighted to be here with you. Thank you. Thank you. Thank you. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਲਾਮ ਫਾਇਦ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਹੁਦ ਬਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਏਹੁਦ ਬਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। We're always glad to have here Secretary Clinton with us. Your visit comes at an extremely interesting time, and the whole Middle East is going through a major transition, and the United States' contribution to both peace and security in the region is as important as ever. Thank you very much, and we are looking forward to have a good visit. Well, I'm always pleased to have a chance to be here in Israel and to continue the conversations you and I have carried on over many years now when we were both much younger. But you're right, Ehud, we're at a time of such historic change, really unprecedented. And we have to work together to face the challenges and to hopefully seize some of the opportunities. So I'm looking forward to our discussion and then to the meeting later this evening with the Prime Minister. ਖਬਰਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਪਰਤਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ।